Friends, let's begin with the central idea of the story. The Thief Story by Ruskin Bond is a simple plot with, you can say, layers of subtle human emotions. Here are you can find certain emotions. Every emotion is written in the first person, and the story advocates the power of love and kindness in reforming a thief. So, whatever love and kindness showed by that Anil towards Hari Singh, that helped to reform a thief into a good human being. So, the narrator, who is a thief, once meets Anil, a simple, kind, and compassionate, struggling writer. The thief earns Anil's trust and becomes friends with him, and eventually landing up into his home as a cook. The narrator's intentions is obviously is to rob Anil and flee. Flee, that means run away. However, he cannot cook, so Anil teaches him how to cook and how to write and feeds him with, you can say, feeds him without without a salary. As the saying goes, old habits die hard. है ना? Old habits die hard. This is the saying in English. The thief makes a small profits by cheating Anil. While shopping for the daily supplies for him, one night the thief finally decides to rob Anil of his, you can say, money and escape. Although he is successful in stealing the money, he can't really bring himself to escape as his conscience pricks him, and he feels guilty of robbing a trusting man like Anil, an honest man like Anil. He returns and keeps the notes that are, you can say, damp due to the rain, and he went back in its place. The next morning, Anil pays. The next morning, Anil pays the thief some money, you can say 50 rupees, and promises to pay him regularly and also to teach him how to write the sentences. Along with the thief, we are here moved by Anil's kindness and generosity, and you can say compassionate gestures of not getting the thief arrested. Although he has a hint of an event of that previous night, he had the hint because the notes, the rupees, were damped with the rainwater. The story successfully established the fact that love, the compassion, the kindness, everything have the potency to return a thief's life around and reform him. So let's begin with our topic, the thief story. Here I am reading the passage for you, and along with that I am explaining also. So try to understand. The narrator starts with the very simple line that I was a thief when I met Anil. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. An experienced and fairly successful hand means the narrator, the thief, here explained us that he was the perfect and, you can say, an expert thief. Anil was watching a wrestling match when he approached him. He was just 25, a tall, a lean fellow. Lean, that means weak and thin fellow. And he looked easygoing, kind and simple enough for the thief's purpose. Thief's purpose, that is his main motto, his main objective is to rob Anil. And he was perfect for that purpose. I hadn't had much luck of late. Much luck of late, that means for few days he had not robbed any person. And now he saw Anil. So thought, and I might be able to get into the young man's confidence. He was thinking that this simple fellow can be easily cheated, है ना, वो उसको अच्छे से cheat कर सकता था, and I can cheat him. So for this, वो उसको flatter करता है. You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So in this way, the narrator explain us that when you want to cheat someone, say some flattery and it will help you to make friends.
So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. So Anil also replied, Hari Singh, that you two look like a wrestler. And that was the shocking statement given by Anil because ऐसा फेयर से देखने को जाएगा, फेस से देखने को जाएंगे तो ही इज नॉट अ रेसलर. उसका ऐसा आउटफिट जरा भी ऐसा नहीं दिख रहा था. उसका आप समझ लो कि ये गेस्चर्स या बॉडी शेप ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो ऐसा रेसलर के जैसा दिखे. सो इन अ वेरी सिंपल वे अनिल टॉक्ड विद हिम, लेकिन वो उसके लिए शॉकिंग था बिकॉज ही वॉज थीन. वेल आई सेड मॉडेस्टली. Modestly, that means you can say in a humble way. Okay, I do wrestle a bit. मैं भी कुछ wrestle कर लेता हूँ. Then Anil asked, "What's your name, dear?" And our narrator explained in a very simple tone. जो नाम दिमाग में आ गया वो उसने बोल दिया, "Sir, I am Hari Singh." And narrator आपसे बात कर रहा है यहाँ पे. That I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employer. After this simple introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting that is roaring, or you can say making the low guttural sound, है ना? Lifting and throwing each other about. So Anil and Hari Singh had a talk on the wrestling match about the wrestlers. And I did not have much to say. वो यहाँ पे कन्फेस कर रहा है हरि सिंह कि मेरे पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं था on which I can talk with Anil. Anil walked away and I followed casually, that means purposelessly I followed him. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. By saying hello, उसने अच्छे से attractive smile से उसके सामने हंस दिया. I want to work for you, sir, I said, but I can't pay you. So here, in the last sentence, but I can't pay you, Anil confess, है ना, वो accept करता है कि I am a poor man and I don't have much to pay you, so I can't put you at work. So बच्चा लोग, here are some difficult words. Lean, that is thin and weak. Fairly, that means properly. Successful, that is victorious. Then next one, fourth one, easygoing, that means having a good nature. Off late, that means you can say for some days. Flattery, that means taffy. This taffy word, आपको मालूम है, last year 9th standard में taffy था, taffy तेगुमई वाला वो लेसन था. टैफी मतलब फ्लैटरी, ऑलवेज जो फ्लैटर करती है दूसरे को वो वैसी लड़की. यहाँ पे फ्लैटरी का मतलब है टैफी, एडमायरिंग. देन 7th वन, मॉडेस्टली, यू कैन से पोलाइटली और इन अ हम्बल वे. ग्रंटिंग, मेकिंग अ लो गटरल साउंड. देन कैजुअली, पर्पसलेसली. अपीलिंग, दैट इज अटेंशन, गेटिंग अट्रैक्टिव. एंड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पैरा, I thought that over for a minute. So when Anil replied him that he could not pay him, at that time, our thief, our narrator of the story, thought that perhaps he had misjudged this man. शायद इसने पहचानने में गलती कर दिया. लेकिन बेटा, the man was enough for his purpose ना, उसको लूटने के लिए बरोबर सही बंदा था. So I asked, can you feed me, sir? And in reply, he also asked me, can you cook? Yes, I can cook. I lied again. Second time झूठ बोलता है. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jamna sweet shop. Jamna sweet shop में लेके जाता है. So he took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I should sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible. है ना? Hari Singh was not sure about his cooking.
उसका कुकिंग के लिए वो श्योर नहीं था, उसने जो कुक किया था वो शायद से सही नहीं था. मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, है ना, भटकने वाले रास्ते पे घूमने वाले कुत्ते को दे दिया था. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, दैट मीन्स टू रन अवे फ्रॉम हिज हाउस, बट आई जस्ट hung around. लेकिन मैं उसके आगे पीछे घूमता रहा, smiling in my most appealing way, and he could not help but he started laughing. Later he patted me on my head and said never mind. बाद में वो बंदा वहाँ पे उसको परसुएड कर लेता है और वो बोलता है कि ठीक है, स्ट्रोक किया उसने उसके बैक पे और बोला ठीक है, चलो वांदा नहीं, आ जाओ जॉब पे वापस से आप, यू कैन कंटिन्यू. So he would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write the whole sentences and to add the numbers. है ना, उसने बोला ठीक है चलो नंबर्स भी लिखने को देंगे, बरोबर है, सब कुछ करने को सीखने को सिखा देंगे. And said he would soon teach me how to write the whole sentences and to add the numbers. I was very grateful with Anil. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. So here, the writer, Mr. Ruskin Bond, had explained us that what is the importance of education in our life. Once you get the education, then the sky is the limit. याद रखो, बाद में स्काई का भी लिमिट है, यू कैन अर्न अनलिमिटेड. सो इट वॉज क्वाइट अ प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. आई मेड टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, है ना. सो इट वॉज क्वाइट, यू कैन से इट वॉज क्वाइट फुल ऑफ हैप्पीनेस working for Anil. So I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. फिर उसके लिए चाय नाश्ता करता था, बाद में जो भी ग्रोसरीज और डे सप्लाईज वेजिटेबल्स वगैरह लाना हो वो लेने को जाता था. यूजुअली बेटा पहले ही मैंने एक प्रोवर्ब बोल दिया था आपके लिए कि एज अ सेइंग गोज दैट ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. ये ओल्ड हैबिट्स छोड़ नहीं रहा है, बहुत हार्डली डाई होता है ओल्ड हैबिट्स. तो यहाँ पे ओल्ड हैबिट्स उसका जाता नहीं है. एंड द हैबिट वाज सिंपल टू क्या होता है उसको, टू रॉब अनिल, टू रॉब द पर्सन. तो वो उसका हैबिट जाता नहीं है यहाँ पे. सो इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. एंड when he went for the day's supply, usually he made a profit of about ₹1 a day. I think he knew. हरी सिंह was not sure, है ना, उसको श्योरिटी नहीं है कि अनिल ये जानता है कि नहीं जानता है. I made a little money. In this way I made some earnings this way or that, but he did not seem to mind, है ना. इसे वो पैसे जमा कर रहा है, चोरी कर रहा है, बट अनिल को उसका कोई फिक्र नहीं है. Some hard words or make sentence misjudge, that means आप किसी को misjudge करते हो तो उसका sentence में आता है आपको make your own sentence by using the following words, and the first word is misjudge. The sentence is he felt that he had completely misjudged the man. Second one, terrible. Ashok had committed a terrible crime. Then I are grateful. We must be grateful to our parents. Then I are to make profit. That means to earn something. He had made a profit of $1,000 in his last venture, in his last job. Next. So, Anil made money by fits and starts. So by fits and starts, that means in short irregular intervals. Seldom you can say, kabhi kabhi, है ना, not regularly. So Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next payment, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for the magazines. ये दिख रहा था कि वो कुछ मैगजीन्स में लिखता था, है ना. What a queer way to make a living. That means what a strange way to make a living. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher.
At night, I saw him tuck the money under the mattress. Tuck the money, you can say to press in. वो देखा मैंने कि वो कुछ छुपा रहा था. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on shopping, है ना, वो day supplies के लिए जाता था जब भी. So and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. In my line of work, you can say in my job. मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, उससे ज़्यादा तो कुछ काम नहीं किया था. I had every opportunities, every chances for doing so. बहुत सारे chances मिले थे मुझे. Anil had given me a key to the door. पहला चांस अनिल ने मुझे एक चाबी भी दे के रखा था रूम का. And I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. So here the narrator हरी सिंह बता रहा है कि भाई ऐसा बंदा तो मेरे लाइफ में मिला ही नहीं. And that is why it was so difficult to plunder यानी ठगना, to plunder or to rob Anil. It's very difficult for Hari Singh. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it's very difficult to rob a careless man like Anil. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Well, it's time. Chalo, time aa gaya. Well, it's time I did some real work. I told myself, I'm out of practice. यानी मेरा काम अभी छूट गया था, बहुत 3 महीना हो गया था, किया नहीं था ना. And if I don't take the money, then he will only waste it on his friends. नहीं लिया तो अपने फ्रेंड पे वेस्ट कर देगा पैसा. After all, he does not even pay me. At the end, वो कन्फेस करता है कि अभी तक तो मुझे कुछ पैसा दिया ही नहीं है. Some words are there और उसके sentences भी है. By fits and starts in short irregular intervals. Preeti made income by fits and starts by doing a small scale business. A queer way, that means a strange way. Raj became the fruit seller. What a queer way to make a living. And to make a living, that means to earn the money. Raj became the fruit seller. What a queer way to make a living. Next. Anil was asleep. He was in a sound sleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. So here you can recall that both were living above that Jamna sweet shop. So from the balcony, there was a ray of moonlight that stepped over the balcony and fell on the bed. So here Anil was sleeping and Hari Singh sat up on the floor, considering the situation. So वो वहाँ पे पहले रेडी होता है, देखता है क्या सिचुएशन है. यू कैन इमेजिन जब चोर चोरी करने के लिए घर में घुसता है, एट दैट टाइम वो यहाँ देखता है, वहाँ देखता है. सो ही इज कंसिडरिंग द एटमॉस्फियर एंड सराउंडिंग. इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, है ना, वो ऐसा ब्लैंकेट से बाहर निकलता है. आई क्रैप्ड अप टू द बेड. अनिल was sleeping peacefully, है ना, अभी भी वो आराम से सोया हुआ है. His face was clear and unlined, that is showing no sign of worry. Unlined था, उसको कोई टेंशन नहीं था कि 600 रुपीज उसने क्विल्ट के नीचे दबा के रखा है. And there was no tension that another strange person is living with him. कोई अनजान इंसान उसके साथ रह रहा है, उसका भी उसको टेंशन नहीं है. Even I had more marks on my face. See the contrast. है ना, उसके चेहरे पे बहुत सारा टेंशन दिख रहा है हरि सिंह के चेहरे पे, लेकिन इसके ऊपर नहीं दिख रहा है. दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, बहुत घाव के भी निशान है. देखो मार्क्स भी है और घाव भी है. माई हैंड, क्योंकि वो चोर था, है ना, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. जब मुझे वो नोट मिला, मैंने धीरे से बिना आवाज किए उसको निकाल लिया. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. मेरी ओर ऐसा मुड़ के सो जाता है, ठीक है. When I found them, I drew them out, towards me. I was startled and quickly crawled out of the room.
I was startled. I was startled. That means I was surprised. मैंने देखा यार ये मेरी ओर मुड़ गया है. ऐसा उसके ब्रीदिंग के जो ये था ब्रीदिंग था वो भी मेरे ऊपर ऐसा हैंड के ऊपर आ रहा है ऐसा. Quickly crawled out of the room, moved slowly from the room, है ना. When I was on the road, I began to run. जब मैंने रोड पे आ गया मैं तो वहां से भागा मैं. I had the notes at my waist. कमर पे बांध के रखा था नोट्स. Held there by the string यानी नाड़ा of my pajama. I slowed down to a walk and counted the notes. धीरे धीरे चलने लगा एंड मैंने नोट्स काउंट किए. Is that 600 or not? 600 rupees, but in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. स्टेशन पे गया, टिकट ऑफिस पे नहीं गया पहला टिकट लेने के लिए. 10:30 टाइम हो चुका था. एंड हियर अगेन ही इज सेइंग अस दैट आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माय लाइफ. कभी भी ट्रेन से चोर कभी भी वहां पे भी वो चोरी करता है. सेकेंड टाइम तो करता ही करता है, पैसा तो लिया ही. ये सेकेंड टाइम उसका चोरी है कि वहां पे भी वो कुछ भी टिकट्स नहीं ले रहा है. सो बट dashed straight to the platform. That means pushed himself directly to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up the speed. अभी भी वो स्पीड में आने के लिए तैयार थी. And I should have been able to jump into one of the carriages. और मैं एक डिब्बे में तो आराम से जा सकता था. But I hesitated. I don't know what was the reason. है ना, मुझे मालूम नहीं क्या रीजन था. बट फॉर सम रीजन आई कांट एंड दैट रीजन आई कांट एक्सप्लेन यू. आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और इस तरह मैंने वो चांस खो दिया था यहाँ से भागने का. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई, I was the only person who was standing at the railway platform, and there was no one on the railway platform. Friends, considering that is thinking over, crawled, moved slowly, unlined, you can say showing no sign of worry or anxiety. Then next, the Lucknow Express वहां से वो जाने के लिए तैयार थी. और राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे पास भागने का मौका भी था लेकिन मैं नहीं गया, है ना. ट्रेन चला गया. आई वॉज द ओनली वन. आई हैड नो फ्रेंड्स, है ना. अभी आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट द फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, है ना. हरि सिंह का बिलीफ है ये. इट वॉज हिज बिलीफ कि फ्रेंड्स लोग होते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, है ना. कोई लॉज में रहना नहीं चाहता है वो, क्योंकि वहां बाद में वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, वो आई कार्ड मांगते हैं, सब करते हैं. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड. एक ही बंदा था जिससे मैंने चोरी किया था. लिविंग द स्टेशन, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मैंने देखा है, thief is explaining us, कि मैंने देखा है जब किसी का कोई ऐसा खो जाता है तो सब बंदे के फेस पे अलग अलग गेस्चर्स आते हैं, अलग अलग इमोशंस आते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस आते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर. ग्रीडी मैन रहेगा तो उसके चेहरे पे डर आता है. द रिच मैन शोड एंगर. द पुअर मैन शोड द एक्सेप्टेंस. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only and only a touch of sadness. And that sadness is not for the loss of the money, but for the loss of the trust which he had put on Hari Singh. वो ऐसा विश्वासघात था जो उसने हरि सिंह के ऊपर, हरि सिंह करके गया था. हरि सिंह के ऊपर उसने विश्वास रखा था. And it was shocking for Anil. तो ये मानता था. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान. मैंने खुद को मैदान में पाया. आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान. मैदान इज अ हिंदी वर्ड, इंडियन वर्ड, बट द इंग्लिश लिटरेचर हैड एक्सेप्टेड लाइक लूट, गटर, है ना, ये सब शब्द लिए हैं. सो आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. द नाइट वॉज चिली. द नाइट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट drizzle had added to my discomfort.
Soon it was raining quite heavily. My shirt, my pajama, my outfit, and all my clothes stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. एक ठंडी हवा चेहरे से जा रही थी. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. Clock tower वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो ऐसा टावर होता है जहाँ पे वॉल ऐसा क्लॉक लगाया रहता है. So I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. So when he was at the platform, the time was 10:30. Now when he came to bazaar, it was midnight. रात के 12 बज चुके. I felt for the notes. Felt for the notes. That means I was worried about the money. They were damp from the rain. वो गिल्ले हो गए थे, पैसे गिल्ले हो गए थे. And it was not my money. It was Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 to 3 rupees to go to the cinema. है ना, वो सुबह में 2-3 रुपया देता था मुझे सिनेमा में जाने के लिए, मूवी देखने के लिए. बट नाउ आई हैड इट एट ऑल. लेकिन अभी तो मेरे पास सब पैसा था. 600 रुपीज था. आई कुड नॉट कुक हिज मील्स. अभी मुझे उसका खाना बनाना नहीं पड़ेगा. रन टू द बाजार. बाजार में नहीं जाना नहीं पड़ेगा डे सप्लाईज के लिए. एंड लर्न टू राइट द होल सेंटेंसेस एनी मोर. है ना, उसके लिए सब लिखना नहीं पड़ेगा. वो कौन करता बैठेगा. Drizzle, you can say mild rain. Discomfort, you can say uneasiness. Damp, wet, opposite of dry. Probably, perhaps. Age, that is outer limit or the border. Next is I had forgotten about them in the excitement of the theft. I had forgotten about them. Them is the pronoun that is particularly used for the education, that teaching learning process. So here Hari Singh had forgotten about them in the excitement, in the, you can say, in the stimulation of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than this few hundred rupees. आज जो मेरे पास जो कुछ थोड़े बहुत 500-600 रुपए है, उसे ज्यादा देगा if I am educated. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and a respected man, was something else. So you can say it's a very simple job to steal. किसी का चोरी करना बहुत सिंपल है. पकड़ा जाना भी ठीक है, चलो सिंपल है. लेकिन इट्स रियली अ बिग मैन, इट्स रियली अ गुड मैन. ऐसा वो जो एक बड़ा इंसान, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, एक सक्सेसफुल मैन, एक क्लेवर, एक रिस्पेक्टेड, सोसाइटी जिसका रिस्पेक्ट करता है ना. दैट्स वाज वेरी डिफिकल्ट. आई शुड गो बैक टू अनिल. मैंने ठान लिया कि मुझे अनिल के पास वापस जाना ही चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई कमिटेड माई सेल्फ, है ना. आई रिजॉल्व माई सेल्फ. मैंने वो एक मन से मन बांध लिया कि मुझे जाना ही चाहिए. इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. सिर्फ पढ़ने लिखने और कुछ सीखने के लिए एटलीस्ट मुझे जाना चाहिए. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट is much easier to steal something than to return it undetected. So he went there hurriedly, and at that time he was very nervous because Hari Singh knew that to steal is easy, but to return undetected is very difficult. है ना, चोरी करना it's very simple, बट किसी को पता नहीं चले वैसा वापस उसी जगह पे उस चीज को रखना, देन दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. आई ओपन द डोर क्वाइटली. एकदम शांत से धीरे से मैंने दरवाजा खोला. आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट. अभी भी वो दहलीज पे खड़ा है, डोरवे पे खड़ा है, अंदर नहीं है, बाहर भी नहीं है, डोरवे पे ही है. सो इट वॉज द क्लाउडेड मूनलाइट. Still there was a light drizzle outside. Anil was in a sound sleep. अभी भी वो जागा नहीं है बंदा.
I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. हाथ में नोट रखे हैं. I felt his breath on my hand. I remained still for some minute. कुछ मिनट के लिए उधर का उधर ही वो एकदम स्टेबल स्टैचू के जैसा खड़ा रहता है. Then my hand found the edge, that is the outer limit of the mattress. अंधेरा था, ऐसे ऐसे हाथ को करके वो मैट्रेस ढूंढता है and slipped under it with the notes. वो हाथ नीचे सरका देता है पैसे के साथ में. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hands towards me. दूसरे दिन वो लेट उठता है. लेट उठने के भी रीजंस बहुत सारे मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं. Why he awoke late in the next morning? The very first reason, because he was ashamed, he felt guilty, है ना, उसको गिल्टी फील हो रहा है. सेकेंडली वो जानना चाहता है कि वो उठ के क्या करेगा क्या नहीं, उसका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा. So I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea and he had his breakfast. उसका ब्रेकफास्ट हो चुका था. He stretched out his hand towards me. ऐसे हाथ फैला रहा है. देखो कोई बंदा सामने से बोल नहीं रहा है. Only he stretched out his hands. तो थोड़ा अंदर से वापस वो चोर जो है ना, उसका जो गिल्टी वो जाग जाता है. And there was a 50 rupees notes between his fingers. My heart sank. उसे डर लग गया कि क्या ये बताना चाहता है without saying any word कि ये नोट कैसे गिल्ला हो गया. हाँ, ये पैसा कैसे गिल्ले हो गए, क्या ये क्वेश्चन था उसके लिए. I thought I had been discovered. मुझे लग रहा था कि मैं पकड़ा गया. I made some money yesterday, he explained. But on the other end वो ऐसे बोल रहा है ना, वो तो ऐसे बोल रहा है कि भाई मैंने तो वो कल पैसे कमाए. So I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अभी तुझे रेगुलर पेमेंट मिलेगा, रेगुलर सैलरी मिलेगा. एंड माई स्पिरिट्स रोज, दैट मीन्स आई बिकेम होपफुल. मुझे कुछ आशा की किरण दिखाई दी. माई स्पिरिट्स रोज. बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. कल की रात की बारिश से अभी भी गिल्ले थे. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सम सेंटेंसेस, ही सेड. चलो बेटा आ जाओ, आज हम लोग सेंटेंस लिखेंगे. सो दिस वॉज, यू कैन से, अ सिंपल बिहेवियर शोड बाय अनिल, दो ही न्यू दैट what had happened the last night. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. उसे पता था बेटा what had happened last night, but neither his lips, or you can say neither his voice nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way. है ना, मैंने वापस वो तीसरी बार यहाँ पे उसके सामने लाफ किया है, हंसा है मैंने. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ. वो स्माइल ऐसे ही आई विदाउट एनी एफर्ट, यू कैन से.